Right, everyone ready? Hi everyone, we welcome you to our fourth webinar, which is how you can view your buyers who have actually viewed your catalog and product. तो आज हम बात करने वाले हैं कि कैसे आप उन buyers की contact details जान सकते हैं जिन्होंने आपका catalog और आपके products देखे हैं. I think we have a lot of audience here who have joined. We will still wait for another 5 minutes to let people join in. हम लोग 5 मिनट और वेट करते हैं, उसके बाद ये सेशन स्टार्ट करेंगे. So we also have two of our speakers with us, Arushi and Rehan, जो लोग आपको ये पूरा वेबिनार समझाने वाले हैं कि कैसे इंडिया मार्ट कैटलॉग पर जो भी आपके बायर्स आते हैं, आपका कैटलॉग देखते हैं, ब्राउज करते हैं, आपके प्रोडक्ट्स देखते हैं, उन बायर्स की डिटेल्स आपको कैसे मिलेंगी और उन बायर्स को आप कैसे कांटेक्ट कर पाओगे. ये बहुत ही सिमिलर है कि अगर आपकी दुकान पे कोई आता है, वो विंडो शॉपिंग करता है, नॉट नेसेसरीली कि वो कोई सामान खरीदे. तो जब वो सिर्फ देख कर जाते हैं सामान, तो आपको भी ऐसा लगता है कि मुझे अगर इस इंसान की डिटेल्स मिल जाए तो शायद मैं फॉलो अप कर पाऊं कि आपको अगर ये प्रोडक्ट चाहिए या कब चाहिए, कितनी क्वांटिटी में चाहिए. तो इन अ सिमिलर फैशन इंडिया मार्ट में आपको एक फीचर मिला है जिससे कि जितने भी लोग आपकी ऑनलाइन शॉप यानी कि इंडिया मार्ट कैटलॉग पर आते हैं, उनकी डिटेल्स आपको मिल सकती हैं. उन डिटेल से आप उन क्लाइंट्स के साथ फॉलो अप कर सकते हैं, अपने प्रोडक्ट डिटेल्स शेयर कर सकते हैं, सो दैट आपकी डील क्लोज हो, आपके पास और अपॉर्चुनिटीज हो बिजनेस करने की. तो ये सारा कुछ डिटेल में आज हम इस वेबिनार में जानने वाले हैं. सो आई विल क्विकली इंट्रोड्यूस आरुषि and Rehan. So these are the two speakers who will be helping us through this entire webinar. ये लोग आपको सब कुछ समझाने वाले हैं कि उन buyers की details कैसे निकाल सकते हैं, उनको contact कैसे कर सकते हैं. So I think Arushi and Rehan, we have a lot of suppliers who have joined in. So let's start this webinar now. Thanks, Megha, for the brief introduction. So let's start. We will be talking about three major points in today's webinar. First is that what are catalog views? Second, what are the important features that are available on the catalog view page of seller.indiamart? And third, the most important one, that how sellers can maximize their business opportunities utilizing this page. So starting with the first point, that what are catalog views? So suppose that I am a seller on IndiaMart and I deal in laptops. So I'll show my catalog, just presenting my screen. So this is my catalog. It looks something like this. We have products listed over here. Now suppose there is a buyer, Ronak, who's interested in buying laptops. So what he do is that he just go to the IndiaMart platform, searches for laptop, and while searching, he came across my catalog. He scrolls it, view different products, like for example, HP laptops, Lenovo laptops. He goes through my catalog, he views the product description, and after that, maybe he posts some kind of inquiry, or maybe he do some kind of activity, or he just leaves. So as a business, it is very important for me to know कि कौन मेरे पेज पे आया और उसने क्या एक्टिविटी करी, उसने मेरे कौन से प्रोडक्ट्स देखे, उसने मतलब क्या एक्टिविटी करी. दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर मी टू नो. एज मेगा ऑल्सो मेंशन कि अगर आपके फिजिकल स्टोर पे कोई आता है तो वो भी जब आप देखता है आपके प्रोडक्ट्स, वो अपना टाइम और एफर्ट लगा रहा है, तो यू ऑल्सो सी कि दिस इज अ पोटेंशियल बायर. एंड हियर ऑल्सो ऑन IndiaMart, viewing catalog, spending time on catalog is very similar to those buyers, those potential buyers. So as a business, I want to know कि मेरा catalog कौन देख रहा है. So now we would be talking कि how we can see that. So on let me open my seller panel.
So this is my seller panel, seller.indiamart.com. Here, this is this tab, catalog views. Once you click on this tab, you will see the list of buyers जिन्होंने आपका कैटलॉग व्यू किया है. फॉर एग्जाम्पल कि यहाँ पे हमारा एक बायर है मधुर जिन्होंने मेरा कैटलॉग व्यू किया है, हर्षित है, देन देयर इज शेखर. तो देयर इज अ लिस्ट ऑफ बायर्स व्हिच इज प्रेजेंट ऑन माय पेज जिन्होंने मेरा कैटलॉग व्यू किया है. नाउ वी वुड बी टॉकिंग अबाउट कि ये जो हम यहाँ पे इंफॉर्मेशन देते हैं, व्हाट इज द रेलेवेंस और व्हाट दिस इंफॉर्मेशन स्टैंड्स फॉर. For example, and Madhur has viewed my catalog. So this is his company name, Dharam Kumar Enterprise. This is the location from which Madhur belongs, or जहाँ पे उनकी company है, which is Noida. And this is the time and date at what point of time they have viewed my catalog. This is very important because जैसे अगर मेरे को पता है कि इन्होंने मेरा कैटलॉग अभी व्यू किया है, तो it must be fresh in their mind कि उन्होंने अभी कैटलॉग व्यू किया है, तो उन्हें पता है कि उन्होंने मेरा कौन सा प्रोडक्ट देखे हैं या उन्होंने क्या एक्टिविटी करी है. So when I would be connecting with them, they'll able to relate, and I as a seller will be able to drive the conversation also कि सर आपने मेरा वो वाला कैटलॉग वो वाला प्रोडक्ट इतने बजे देखा था, इस वजह से I'm contacting you. Hence the chances of conversion also increases. So this time and date plays a very important role in deciding कि हम किस buyer से बात कर रहे हैं और क्या बात कर रहे हैं. And now this is the pages that they have viewed. जैसे मधुर ने मेरा catalog page देखा है, that is the main page of the catalog that we were seeing, the home page. उन्होंने मेरा ये वाला पेज देखा है, इससे मुझे इंफॉर्मेशन मिलती है. फॉर एग्जाम्पल शेखर है, शेखर ने मेरा इंटेल कोर i7 देखा है, i5 देखा है, तो इससे मुझे पता चलता है कि शेखर is interested maybe in i7 or i5 or similar kind of products. So this is very important to know कि वो क्या बायर क्या खरीदना चाह रहा है, आपको कौन सा प्रोडक्ट खरीदना चाह रहा है. Now there are additional details also जिससे हमें अपना बैकग्राउंड पता चलता है बायर का. दिस इज मेंबर सिंस, मतलब कि वो हमारे इंडिया मार्ट के प्लेटफॉर्म पे कितना पुराना बायर है. मधुर इज अ 13-year-old बायर. देन द रिक्वायरमेंट्स टिल नाउ कि उन्होंने कितनी रिक्वायरमेंट्स अभी तक डाली हैं. मधुर ने 6 रिक्वायरमेंट्स डाली हैं अभी तक. देन द प्रोडक्ट्स ऑफ इंटरेस्ट, मतलब वो किस टाइप के प्रोडक्ट्स के साथ मतलब जिनमें वो पहले भी उनकी रिक्वायरमेंट डाली है, वो सारे प्रोडक्ट्स यहाँ पे आ जाते हैं, जैसे मे बी रॉ बल्ब मटेरियल. देन अवेलेबल है कि उन्होंने कौन से उनको कांटेक्ट करने के लिए कौन से हमारे पास मीडियम्स अवेलेबल है या वेज अवेलेबल है. मतलब इसका मतलब है कि हमारे पास मधुर का मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी प्रेजेंट है. So these informations tell us कि हमारा जो बायर है उसका बैकग्राउंड क्या है, प्लस उसकी रिक्वायरमेंट कैसी होगी. Hence we would be able to make decision while connecting with them and drive conversation. Now the next thing comes कि now we know about the buyer, उसने मेरा कैटलॉग देखा है, now we know that. The next step comes that we want to contact them. So these are the 3 mediums, 3 ways जिससे हम contact कर सकते हैं. First is directly calling the buyer. Second is कि हम उनको email भेज सकते हैं. और third is हम उनको सीधा यहीं से मैसेज भेज सकते हैं. So now starting with first, which is call buyer. Once you click on this call buyer option, we see this kind of pop-up coming up, जहाँ पे हमें टॉप पे दिख रहा होता है बायर का फोन नंबर. यहाँ पे वी कैन डू इज कि हमें फोन नंबर दिख रहा है तो हम अपनी डायलिंग अपना मोबाइल स्क्रीन पे ये नंबर डाल के वी कैन डायरेक्टली कॉल द बायर. बट दैट वुड बी ऑल्सो कि हम भेज देते हैं, उसके बाद वी आर कॉलिंग. व्हाट इज इजी इज कि यहाँ पे हम अपने डिवाइस ही लिस्ट करना है. इसका मतलब ये है कि अगर these are my devices that I have, this OnePlus, this Google phone and this Oppo. So this is a list of my devices which I have connected with my IM account. So for example that I want this is my OnePlus and I want to call the buyer using this OnePlus device. So I just click on this call option. And here it comes that please check your phone to start the call. So what happened is that there is a notification that comes on my device. This is the notification. This is because that I have installed my IndiaMart app on the particular device, this Oppo device. इस वजह से मुझे ये notification आ रहा है. Once I click on this device, on this notification,
तो मेरा कॉल ट्रिगर हो जाएगा डायरेक्टली बायर को। इट्स दैट सिंपल। मतलब ये जो हमारे होता है कि हम डायलिंग अपना खोलें, डायलिंग पैड उस पर टाइप करें, उससे हम सब बच जाते हैं। नाउ यू कैन सी कि यहाँ पे 2-3 डिवाइसेस लिस्टेड हैं। इफ वी आर वर्किंग इन अ टीम एंड आई वांट कि मेरा एक पर्टिकुलर टीम मेंबर ही उस पर कॉल करे, या मेरे पास अभी इस टाइम पे OnePlus नहीं है, आई वांट टू यूज अनदर डिवाइस, मेरे पास Oppo अवेलेबल है, तो वी जस्ट हैव टू डाउनलोड द IndiaMART ऐप इन दैट पर्टिकुलर डिवाइस, और उससे वी नीड टू लॉग इन टू द सेम अकाउंट जो हम यहाँ पे व्यू कर रहे हैं। जैसे कि मेरा अकाउंट है अभी, तो मैं उसी अकाउंट को उस फोन नंबर पे उस डिवाइस पे लॉग इन कर लूंगी थ्रू माई IndiaMART ऐप। इससे मेरा वो जो डिवाइस होगा वो यहाँ इस लिस्ट में ऐड हो जाएगा। नाउ मूविंग टू व्यू ईमेल ID. View email ID is that you can simply get the buyer's email ID. You can copy it using this option, and you can go to Gmail or any other mailing platform and just send a simple mail to them that, sir, you have viewed my catalog, so are you interested in any kind of product or something? So this is something that you can do using this email ID. बट एक चीज होती है कि नाउ हम ईमेल आईडी यहाँ से जाएंगे, कॉपी करेंगे, और वी विल गो टू अनदर प्लेटफॉर्म ऑन दैट। The more easier method is कि यहाँ से हम मैसेज सीधा भेज दे उनको। So this option we have given where you can type in the message that you want to send to the buyer, or you can select any of the template which is available. These are 3 simple templates which are available, where you can simply tell them that, sir, are you interested in any of the product that you have viewed? And you can share your catalog link with them, or you can just ask them ki, sir, what is the best time to talk, in case they are not taking call. So you can do that. Once you click on the send message, you would be directed to the lead manager. Lead manager is this tab where you would be where you must be utilizing it to contact various buyers. So you can simply go to lead manager by clicking on the send message. Also, what you can do is that there is this share product option available. So you know that there are certain products that the buyer has viewed. जैसे उसने i5 और i7 शेखर ने व्यू किया था, तो you can simply share those products by selecting it, or related products you can select, add the prices, and just click on send. Once you click on send, you would be directed to the lead manager. This feature is also available on lead manager. But for the case of catalog view, you can simply do that from the same page itself. You don't have to toggle screens. तो यहाँ से you can just share the products, maybe the same product जो उन्होंने देखे हैं, or maybe the related products. So this will look something like this. Moving back to the page, there are some additional features also available. For example, filter by time or filter by location. So filter by time is basically very important when it comes कि you want to contact the buyer जिसने अभी आपका कैटलॉग देखा है, उसको आप अभी कांटेक्ट करना चाहते हैं, तो you can simply do apply a filter of today. See, अभी मेरा आज कैटलॉग व्यू किया है मधुर ने, so I'll see those results on the top, और मैं फिर उनको ही कांटेक्ट कर रही हूँ क्योंकि मैं उनको देख सकती हूँ कि उन्होंने मेरा कैटलॉग आज देखा है। Hence एक चीज ये जो होती है, the early you connect, the early conversion you get. So this thing can be derived easily by using this filter. Also, if you want कि you deal only in your local areas, so you can select location filters. If you deal India में, so you can select India filter. Or maybe you deal with foreign clients, so you can select foreign clients over there. You will get the list of buyers जो कि सिर्फ foreign से belong करते होंगे. So these filters will ease out your search. Now, I think we should take some question and answers before moving forward. So over to Rona for that. Thank you. So we have got a few questions in the live chat as well as the form that we had shared earlier. So Arushi, first question we will be taking up is a common one, which people want to know is that how would they get to know that which products within their catalog has been viewed? Let's say I have 5 products in my catalog. If I want to contact the buyers who have like the catalog you have shown, I want to understand
which all are looking for laptop. So how can I identify that? Can you reiterate that part? So that is very simple. Let me show my screen. So there's this catalog. This is my catalog, for example. If a buyer comes, he browses he spends time on my laptop. He browses various products. So he's scrolling down. He clicks on this products and services. Maybe he clicks on it or maybe not. If he just scrolls down my catalog, spend time on it, that is something which is counted as a product, as a catalog view. So like if we has even viewed this page, product information page or product description page, if he has viewed this page, this will be counted as a catalog view. Because here the person is spending time and viewing the details of a particular product, definitely he might be looking for one. So this is counted as a catalog view. And if we go back to the catalog view page, Arushi, on seller. So just a second. So on the catalog views page itself, जो list of buyers आपके पास आ रहा होता है, तो हर buyer ने कौन सा पेज व्यू करा है वो आपको लेफ्ट हैंड साइड में कार्ड पे दिख रहा होता है. We will share that with me there also. वहां पर अगर किसी ने आपका प्रोडक्ट नंबर 1 व्यू करा है तो वो दिख जाएगा कि उसने कौन सा प्रोडक्ट व्यू करा है. किसी ने कोई दूसरा प्रोडक्ट व्यू करा है तो वो आपको सेपरेटली हमें कार्ड के ऊपर दिख रहा होता है. So if you scroll down, you will be able to see an example here. जैसे ये पर्टिकुलर बायर था, ये करता है इस कैटलॉग में से उसने ये 3 डिफरेंट टाइप्स ऑफ प्रोडक्ट्स देखे थे, तो अलग-अलग टाइप के कुछ प्रोसेसर थे. कोई दूसरा बायर था जिसने HP पे लैपटॉप चेक करा. And maybe there is some other buyer जिसने again कोई similar product व्यू करा. So whichever buyer views whichever different type of product, we will be able to see that from the catalog views pages. Right. So there's another question, Arushi, that we are getting is from Yogesh. So basically he is asking that do we send any notification in case a customer views their product catalogs? So currently what we are doing is on seller dashboard, there is something called suggested actions that comes. So wahan pe, let me show it. So on seller dashboard, we have this section also जहाँ पे हम catalog views दिखा रहे होते हैं, जिन्होंने हमारे catalog views देखे. This यहाँ पे जो suggested action का widget होता है, यहाँ पे भी हम दिखा रहे होते हैं कि see these buyers have viewed your catalog, contact them for business. यहाँ पे ये दिखा रहे, मतलब इससे you can get to know कि यहाँ पे हमारे जो buyer हैं उन्होंने आपका catalog देखा है. So latest जो 3 buyers होते हैं वो आपको डैशबोर्ड पर जो राइट हैंड साइड में catalog views वाला बॉक्स दिख रहा है उसके अंदर भी दिख रहा है. ऐप के ऊपर नोटिफिकेशन अभी नहीं आती है. We are working on introducing that also. इसके अलावा ये जो मेथड होता है जहाँ से आपको पता चलता रहता है वो ईमेल. So ईमेल पे आपको हम लोग रेगुलरली ये लिस्ट ऑफ कैटलॉग विजिटर्स भी भेजते रहते हैं. जिस भी बायर ने आपका कैटलॉग विजिट करा है उसके कुछ डिटेल्स आपको ईमेल के ऊपर मिलते रहते हैं. So you should check your inbox for those updates. Absolutely. So there's another question from Goodwill Techno. They're asking what are the best practices to connect with the buyer. So we have briefly covered that. Can you reiterate those points once for us? So the best practices I would say, जो मैंने अभी पहले भी बोला था, the earlier you connect, the earlier there are chances of conversion. इसका मतलब यही है कि हमें जैसे पता है कि उन्होंने अभी देखा है, तो बायर के दिमाग में भी इस टाइम फ्रेश होता है कि आई हैव सीन, फॉर एग्जांपल उन्होंने मेरा कैटलॉग देखा है, तो आरुषि का कैटलॉग मैंने अभी देखा था. तो व्हेन आई वुड बी कनेक्टिंग विद देम, दे वुड बी एबल टू रिलेट कि व्हाट आई एम टॉकिंग अबाउट. इफ आई एम टॉकिंग अबाउट कि सर आपने आपको लैपटॉप की कोई रिक्वायरमेंट है, तो फिर वो उस टाइम पे उनको पता होगा कि हाँ, आई वाज स्क्रॉलिंग लैपटॉप का कैटलॉग ऑन इंडिया मार्ट, दैट इज व्हाई दिस पर्सन इज कॉलिंग मी.
This is something which is important. इसके अलावा what we recommend is that you should use app also very frequently, because app पे it's very easy कि एकदम से अगर कोई कैटलॉग व्यू आता है तो you just can open it and visit the platform daily, check the app for any kind of catalog view. This will also increase the lead conversion chances. The third one I would say is that once you see that the person has viewed your catalog, आप एकदम से उसको कॉल करो, because among these three ways that we have talked about, call has the highest, मतलब जो हमने भी जिन सेलर से बात करी है उनका भी यही कहना है कि the chances of conversion is most जहाँ पे हमने उनको कॉल करी है, क्योंकि तभी के तभी you would be able to close the requirement, कि requirement है भी या नहीं है. So call is the best medium or the way to call the buyer. Agar in case they are not picking up call, you should definitely drop a message using the lead manager, because when they'll come back to the platform, they might be checking that. So these are the three things that you should use. Right. So, since Arushi, you have already mentioned about our app. So there's a question from Manish Pandey. He's asking, how can I use this feature on Android app? So Avinash, can we have this demo on the app? Because I think people have confusion regarding that. Yeah, sure. So I will present my screen on the mobile screen. तो आपको मेरा मोबाइल ऐप स्क्रीन पे आपको मेरा सेलर डैशबोर्ड दिख रहा होगा. तो यहाँ पे आप सबसे टॉप में ये जो बेल आइकन के लेफ्ट पे एक आई आइकन है, यहाँ से भी आप कैटलॉग व्यूज जा सकते हैं. ये पहला स्टेप है कैटलॉग व्यूज जाने का. दूसरा तरीका ये है कि आप सेलर डैशबोर्ड पे आप लेफ्ट नेविगेशन मेनू पे भी जा सकते हैं और यहाँ पे आपको दिख रहा होगा होम व्यूअर कैटलॉग नीचे सब्सक्रिप्शन प्लान्स के नीचे. इस पे भी क्लिक करेंगे तो भी आप कैटलॉग व्यूज में पहुंच जाएंगे. तीसरा तरीका हमने नया शुरू किया है. ये जैसे डेस्कटॉप पे सजेस्टेड एक्शंस का विजेट था, वैसे ही ऐप पे भी सजेस्टेड एक्शंस का विजेट है. और यहाँ पे आपको बीच में दिख रहा हो कि 705 बायर्स आर लुकिंग फॉर ए प्रोडक्ट कैटलॉग. यहाँ पे भी क्लिक करने पे आप कैटलॉग व्यूज में चले जाएंगे. चौथा तरीका है कि डैशबोर्ड में एक विजेट है लीड मैनेजर के विजेट के नीचे होम व्यूअर कैटलॉग. इस पे भी आप व्यू ऑल पे क्लिक करेंगे तो भी आप कैटलॉग व्यूज पे चले जाएंगे. और लास्ट स्टेप है, अगर आप लीड मैनेजर ज्यादा यूज करते हैं तो लीड मैनेजर में भी जाके यहाँ पे आप टॉप कंटेक्स्ट मेनू में जाके यहाँ पे बिस्ट्रीट लिखा आ रहा है, यहाँ से भी क्लिक करने से आप कैटलॉग व्यूज जा सकते हैं. तो ये तरीके हो गए कि आप ऐप पे भी कैटलॉग व्यू सेक्शन का एक्सेस कैसे करेंगे. अब एक बार आप कैटलॉग व्यूज पे आ गए तो आपको क्या क्या डिटेल्स विजिबल रहती हैं. जैसे पहला चीज जो आपको विजिबल होगा कि बायर का नाम क्या है. जैसे यहाँ पे रमेश है, अमोल है, विशाल है, ये सारे बायर्स हैं जिन्होंने आपका कैटलॉग विजिट किया है. और उनके डिटेल्स क्या क्या अवेलेबल हैं. जैसे अमोल के डिटेल्स हैं, फोन और ईमेल अवेलेबल हैं. विशाल के भी फोन और ईमेल अवेलेबल हैं. इनका लोकेशन क्या है. अमोल है महाराष्ट्र से और विशाल है हिमाचल प्रदेश से. और इन्होंने आपका कौन सा पेज विजिट किया है. जैसे अमोल ने आपका प्रोडक्ट डिटेल पेज विजिट किया है, विशाल ने आपका FCP MDC पेज विजिट किया है, मोहम्मद ने भी आपको प्रोडक्ट डिटेल्स पेज विजिट किया है. और अगर आप किसी के कार्ड में आपको एक 1 मोर करके दिख रहा होगा या 2 मोर करके दिख रहा होगा, उस पर क्लिक करने पे आपको नए स्क्रीन्स दिखेंगे जो उन्होंने विजिट किया है. जैसे अर्शदीप ने प्रोडक्ट डिटेल स्क्रीन भी विजिट किया है और कंपनी पेज भी विजिट किया है. यानी इन्होंने आपका कोई प्रोडक्ट का डिटेल पेज भी विजिट किया है और आपका कोई कैटलॉग पेज, पूरा कैटलॉग पेज भी विजिट किया है. तो ये डिटेल्स, और इनमें जैसे डेस्कटॉप पे हमने देखा था तो हमने यहाँ पे भी ये सारे बायर्स इंडिया मार्ट प्लेटफॉर्म में कब से हैं ये इन्फॉर्मेशन भी अवेलेबल है. जैसे अमोल है मेंबर सिंस 25 में 21 से ये इंडिया मार्ट प्लेटफॉर्म से जुड़े हुए हैं. बाकी जैसे हमने डेस्कटॉप पे देखा कि आप कैसे कांटेक्ट कर सकते हैं बायर्स को, वैसे यहाँ पे भी आप सीधा लीड मैनेजर, अगर आप कार्ड पे कहीं पे भी क्लिक करेंगे तो सीधा लीड मैनेजर खुल जाता है. जैसे अमोल के कार्ड पे मैं क्लिक करूँ तो इनका लीड मैनेजर खुल गया. तो यहाँ से भी आप बातचीत कंटिन्यू कर सकते हैं. और तरीके हैं, जैसे अगर मैंने विशाल को आप डायरेक्ट कैटलॉग लिंक शेयर करना चाहते हैं तो ये जो शेयर कैटलॉग लिंक दिख रहा है इस पे आप अगर क्लिक करेंगे तो सीधा कैटलॉग लिंक शेयर हो जाता है और आपकी कम्युनिकेशन स्टार्ट हो जाती है इनसे लीड मैनेजर पे.
उसी तरह टाइम टू टॉक भी है, और आप कोई टाइप करके मैसेज भेजना चाहते हैं तो सेंड मैसेज भी टाइप करके भेज सकते हैं। और लास्ट ऑप्शन है जो कि जैसे आरुषि ने बताया सबसे इंपॉर्टेंट है, वो है आपकी जो कॉल बटन दिख रहे हैं वहां पे किसी भी जिस बायर के अगेंस्ट कॉल बटन है उस पर क्लिक करेंगे तो उस बायर को कॉल चली जाएगी और आप डायरेक्ट फोन से ही बात कर सकेंगे। आई थिंक दैट कवर्स ऑल। Right. Thank you, Avinash. Rehan, we have a few more questions to go through. Ronak, sorry to interrupt. Just before we go ahead, iOS app के users भी जो हैं उनके लिए भी available है. They are also able to do catalog use if they are using iOS devices. India one के iOS app की catalog use feature is available. Right. So suntextmills@gmail.com is asking how to increase catalog views. Like we have talked so far about what are catalog views and how can our sellers contact those buyers, but the question is how they can get more catalog views. So this is also a very fair question. See, catalog views that is also going to be affected by how well you have created your catalog, how many products you have added, what is the quality of images which you have added, how well have you detailed the description, how many specifications of your products have you added in your catalog, in your different products. So if you ensure that your catalog score is high or your product score is high, it is going to attract the buyer more when they are searching for your products either even on Google or even on IndiaMart directly. And if you have a very enriched catalog with very enriched products, it increases the chances of them visiting your catalog as well as increasing your inquiries. So for this, some tips you can very easily find in one of the previous webinars which we did, where we talked in a lot of detail about how you can improve your catalog and products which you have added in your catalog. Right. Thanks, and we will attach the link to the previous webinar in the live chat as well. So you can go ahead and rewatch that particular webinar. In that, Ravi has already described this in great detail. Now, Rehan, another question we are having is from Dubey Industries. They are asking, are catalog views free? I think there is some question regarding that. So as of now, there is no extra charge which is being put in order to connect with buyers who have directly viewed your catalogs. There is no, there is no valid balance which you need to spend or anything like that as of now. Right. So we have got a few more questions regarding catalogs and how to add products. So I would ask all of those viewers to go ahead and check our previous webinar. Then I think another generic question which I am just summarizing because this question has been asked by a few people. So they are asking how to maximize lead closure. So Rehan, can you share how it is being currently done by some of our most star as in active sellers? So as Arushi has shared some of the top tips once, you should try to be very regular in checking your catalog visitors. You try to check every day who all are the people who have viewed your catalog. जितना हो सके रोज आगे चेक करिए. डेस्कटॉप अगर आप लैपटॉप यूज करते हैं लैपटॉप पे चेक करिए, ऐप यूज करते हैं तो ऐप पे चेक करिए, बट रेगुलरली यूज करिए, जिससे कि ये होगा कि जैसे ही बायर ने आपका कैटलॉग व्यू करा है, you can contact them either immediately or at least the same day so that they remember or they have that requirement for which they were browsing the catalog, and you can talk to them in many different ways. What most of our active sellers do is that they try to call the buyer so that they immediately get to know if there is a requirement and if they can help the buyer with anything. If they are not probably available on call, then they would also drop a message through Lead Manager and other various options which we have also. So check very regularly, try to contact the buyer quickly as soon as possible, and contact them in many different ways if one of the ways is not working. Right.
So just a follow-up question here, Rehan. This builds up on what Abhishek Adhikari has asked in the live chat. So he's asking, like, if the buyer closes their mobile tab after sharing the requirement, will they receive the message on email or text? हाँ, so होता क्या है, जब भी आप लीड मैनेजर के थ्रू किसी बायर को रिप्लाई करते हो तो उसको एसएमएस ईमेल वगैरह सारा कुछ जा रहा होता है। इंक्वायरी के केस में भी ऐसा हो रहा होता है, वाइलिड के केस में भी ऐसा हो रहा होता है, और सिमिलरली जब भी आप लीड मैनेजर के थ्रू मैसेज करते हो या तो बायर को एसएमएस एंड ईमेल के थ्रू सेंड किया जाता है। Right. Some questions are regarding the importance of photo products. Definitely, you should add products. So I am not taking that question separately. Another question that folks have asked us is that how regularly should they update their catalog? So the answer to that is, as soon as there are some new specifications. Let's say there has been a change in the price, you should update that in your IndiaMAT catalog. But it is not like that every day you keep making certain changes. That is not required. Now, there are how to get. I think we have covered most of the burning questions. Let me check Rehan once again in the live chat. So we have two more questions that we have received in the form. Can you cover those very quickly? First of all, is they are asking how they can get buyers in their local area. Like, I think they are asking both from the buy lead perspective as well as from the catalog views perspective. So Let me share my screen for this. So for that, see, if these are the this is a location filter that we have talked earlier also. यहाँ पे if you want कि you should contact buyers who belongs to your local area only, so you can simply search also. You can search from here also, or you can just select. Maybe जैसे अभी I'm sitting in Noida and I want to see buyers only in Noida, so I'll just click on this Noida and see all the buyers who belongs or whose company is in Noida. So this is something which I can do in order to contact with local leads. If जैसे हमने पहले भी बात करी थी, if we see if कि हमें नोएडा ना करके पूरा यूपी कवर करना है, तो I'll just click on Uttar Pradesh and then I would be seeing all those leads. So by using this filter, this simple filter, you can just filter out the leads that you want to contact. So this will save your time in case you only deal with the local area. So you can just do that. Right. Thanks. I think we can take one last question before we run out of time. So Non-Gems and Jewelry has asked in the live chat, like how they can identify which products are getting more catalog views and which products are actually non-performing, like those products are not getting any catalog views. So as of now, we don't have a separate report available for this. ऐसा नहीं है कि कहीं already कोई report बनी जो आपको product by product number of पर आ रहे, but we are working on this and soon enough इस तरह का report भी हम लोग available करवाएंगे। आपको देख पाओगे कौन से product के ज़्यादा views आ रहे हैं, contribution। Right. So basically, I would say that आपको पता है, you know what products you have in your catalog currently, and if you keep checking the catalog view section regularly, you would get a fair bit of idea that okay, product A is performing better than product B. So definitely we have taken this feedback, and in near future you would get to see this feature as well. Also in card also you can check that, because card में you can see the products that have viewed ना, तो फिर you will get this idea कि the products viewed में अगर आपका वही वाला product बहुत frequently आ रहा है, so you can gauge that product is working better than others. Right. Yes. So Megha, should we close this now? Or am I missing any question?
So I think had a very, very good session today. And so many people have actually joined in, still getting a lot of questions. And I think we can take these questions maybe later in a feedback form. So we had a great session today. A lot of people have joined in, and thank you so much, guys, for joining in and making the session a good one. And we hope to see all of you in our next session as well. अभी आपके पास अगर कोई भी क्वेश्चन है, कुछ भी अगर आपको समझना है, हम लोग एक आपको मेल करने वाले हैं जिसमें एक फीडबैक फॉर्म होगा. वी वुड हाईली रिक्वेस्ट अगर आप उस फीडबैक फॉर्म पर अपना रेटिंग दें. ऑल्सो अगर कोई भी क्वेश्चन आपको लगता है रह गया है इस वेबिनार में जो हम कवर नहीं कर पाए, फील फ्री to send all of those questions. We'll try हम जितना आंसर कर पाए maybe in the next webinar, or you can also connect with your respective account managers to get your questions resolved. Right. Thank you, Megha. Thank you everyone for joining in this webinar. In case you have missed any portion of the webinar, you can always go ahead and rewatch the webinar like Megha mentioned. And definitely we will be sharing you the feedback form shortly. If you have missed anything, I would advise you to put those questions there again. And let's say if you have very specific questions regarding your catalog that, okay, I want to add this product in my catalog. So I suggest that you connect with your account manager. You can get his details from the seller dashboard. They would be able to guide you regarding the changes in your catalog. And we will also be putting the link of our previous webinars in the chat, like I have already promised. So thanks everyone. Megha, please take us off. Thank you everyone for joining. Thanks a lot. We will now end the stream and shall share the stream link with all of you. आप लोग वहां जाकर ये वीडियो देख सकते हैं अगर आपने कुछ भी मिस किया है. This will be saved on our YouTube channel. So go ahead, have a look. And अगर आपको कोई भी questions है, of course आप comments में भी कर सकते हैं अपना response share. And we'll also share a feedback form जहाँ पर आप अपना response और questions share कर सकते हैं. Thank you so much.